जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी समीपे पद्मावती नायिक्याः सन्निधौ भगवत् भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमाणेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे तदीयायां पुष्यमी नक्षत्र युक्त वासरः वासरस्तु स्थिरवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ मम गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रोद्भवस्य नामधेयस्य గోత్రము పేరు నక్షత్రం చెప్పుకోండి. చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे सर्वमंगल कार्याणि अनुकूल सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल शोक शत्रु निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल भूत प्रेत पिशाची बाधा निवृत्ति सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विषहरण निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल संपत्कर सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल विद्या प्राप्ति द्वारा अखंड ऐश्वर्य स्थिर निवास सिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः शुभः स्थानेषु स्थिताः अत्यंत शुभफल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः अशुभः स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभफल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी देवताम् उद्यस्य देवता प्रीत्यर्थं श्री पद्मावती नायक्याः सन्निधौ प्रातःकाल आराधना अनन्तरं कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. प्रथमतः निर्विघ्न परिसमाप्ति अवाप्ति सिद्ध्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. तदंगत्वेन स्थलशुद्ध्यर्थं देहशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थं शुद्धि पुण्याः वचनं करिष्ये. ततः कन्यादान महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये इति संकल्प्य अम्मवारिनि प्रार्थना చేయండి. ఓం నమో పద్మాననాయై నమో నమః. శుభోదయం. శుభాన్ని కలిగించేటువంటి చక్కని శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం శుక్లపక్షంలో చవితి తిథిపూర్వకంగా సాగుతూ ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి శనివారం నాడు అదిగో ప్రాతకాలాన్నికమైనటువంటి అన్ని విధాలైన సేవా విశేషాలను
స్వీకరించినటువంటి మాతృమూర్తి శ్రీమతి పద్మావతి దివ్య మంత్రమూర్తి చక్కనైనటువంటి తమ యొక్క నిత్య తిరుకల్యాణోత్సవ విశేషాన్ని సమస్త భక్త సంకల్పపూర్వకంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉండేటువంటి చక్కని శుభమైనటువంటి క్షణాలు. శ్రీ లక్ష్మీ కళ్యాణి కమలా కమలాలయా పద్మా మామక చేత సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునాసాకం. అమ్మవారిని చక్కగా ప్రార్థిస్తూ పెద్దలు అంటారు ఏమంటే, అమ్మా ఒకే ఒక అక్షరంతో అమ్మవారు పిలువబడతారు, శ్రీహి అని. శ్రీహి అంటే ఐశ్వర్యము అని అర్థం. ఐశ్వర్యమే ఆమె యొక్క రూపం. కాబట్టి అటువంటి ఐశ్వర్యంతో కూడి ఉండడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప లక్షణం. అందుకనే ఎవరైనా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా మగవారిని అయితే శ్రీ అని ముందు ఉంచి మళ్ళీ వారి పేరు చెప్పడం. ఎందుకంటే లక్ష్మీయుతుడుగా ఆ వ్యక్తి ఉండాలి, ఐశ్వర్య సంపన్నుడుగా ప్రకాశించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చక్కగా శ్రీ అనేటువంటి ఒకే ఒక అక్షరాన్ని ఆ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క उनका पूजन कर रहे हैं। आद्यो विश्वक्सेनमर्चयित, जैसे पहले कहते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में विश्वक्सेन भगवान आदिदेव हैं, आदि पूज्य हैं, वैसे उनका पूजन होता है। तत्पश्चात वरुण भगवान को कलश में आवाहन कर जैसे संकल्प किए थे, स्थल शुद्ध्यर्थम स्थान शुद्ध्यर्थम, वहाँ पर कलश में वरुण भगवान का आवाहन कर स्थान शुद्धि करते हैं। तत्पश्चात भगवत कृपा के लिए भगवान को लोक रक्षणा का संकल्प देते हुए उनके कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसमें अनंत वासुकी तथा शेषनाग जैसे नागों का आवाहन होता है। फिर पूजन करके ब्रह्मसूत्र जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत का पूजन होता है। प्रणवादि देवताओं का आवाहन कर पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रभु श्री वेंकटेश्वर भगवान जो इच्छा रूपधारी हैं, जिसे कहते हैं वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटेश जैसा भगवान आज तक न कभी हुआ है ना होने वाले हैं। वैसे अद्वितीय भगवान का आवाहन आदि षोडशोपचार विधियाँ होंगी। तत्पश्चात उनकी पत्नी जो उनकी अति प्रियतमा पत्नी है पद्मावती देवी, आकाश राज की पुत्री जो हैं, उनका यहाँ पर आवाहन होगा। आवाहन आदि षोडशोपचार विधियाँ होंगी। तत्पश्चात कन्यादान का मुहूर्त होगा। अर्चकगण द्वारा क्रियमाण यह कर्म जो है यह सकल शुभों के लिए, हम भक्तों के लिए सकल शुभदायक होता है। तथा जैसे कहते हैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांडों के नायक जो हैं श्री आदि मध्यांत रहित जो हैं प्रभु श्री वेंकटेश्वर भगवान, वह साक्षात इस क्षेत्र में विराजमान होते हुए हम भक्तों पर कृपा करते हुए यह जो कलिकल्मष दोषों का नाश करते हुए हमारे साथ साथ चलने वाले भगवान हैं। कलयुग के वैकुंठ माने जाने वाले श्री तिरुपति क्षेत्र में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सदा यहाँ पर रहते हुए अपने भक्तों की दर्शन, साक्षात वे खुद अपने भक्तों की दर्शन करने के लालस और इच्छुक बने रहते हैं। तथा अर्चकगण द्वारा यहाँ पर पुण्यावशन कलश में वरुण भगवान का आवाहन करके उनका पूजन, संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न का आवाहन कर भगवान की पूजन अर्चन हो रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की इस दिव्य मंगल कल्याणोत्सव का दर्शन करते हैं। जात वेद पवित्रवत पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चुषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे भाभ्याहं देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे ऐश्वदेवे पुनते देव्यागोहत् यस्यै बह्वे स्तनुवा वेदपृष्ठाः तया मुदन्तसुदमाद्येषु अयज्ञस्यामपतयोरयेणाम् ऐश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो
वातप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भ्यः सवितस्रभिः परषष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षेः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्गशः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमाने रध्येते ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिष्वण पावमानेर्योऽध्येते ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तयनेः सुदुर्गाहि पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्धयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सुदुर्गाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मवितो वयं पूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रसुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजाः प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं षण्णो अस्तद्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओषधेः पूर्वा जाता देवे मनैनु बभ्रूणाः महज्ञा सदन्धामानि सप्त च शतं वो अम्बधामानि सहस्रामुतवोरुहाः तथा शतक्रत्वा यूयमिमं मे अगदं कृता ओषधे प्रते गृह्णेत पुष्पावते प्रसोवारेः अश्वा इव सजत्वारेर्वेरुधः पारयिष्णवाः ओषधेरिते मातरस्तद्वो देवेरुपब्रुवे सनयमश्वङ्गां वास आत्मानन्दवा पूरुषा अश्वध्यवो निषदनं पर्णवो वसतिष्कृता गोभाजयित्किलासधयत्सनवधपोरुषं तत्रौषधे समग्मदराजा न समेता इव विप्रस उच्यते विषग्रक्षोहामे वचातनः अश्वावते सोमावते मूर्जयन्ते मुदोजसम् आवित्स सर्वा ओषधिरश्मारिष्टतादये उच्छुष्मा ओषधीनाङ्गवो गोष्ठादिवेरते धनज्ञासनिष्यन्ते नामात्मानन्दवा पुरुषा निष्कृतिर्नाम वो माताथो यो यज्ञस्थनिष्कृतेः शिरापदत्रिणे स्तनयदामयति निष्कृता अतिविश्वा परिष्ठास्तेन एव व्रजमक्रमः ओषधे प्राचुच्यवर्यत्किञ्च तन्वोरपाः यदि मां वाजयन्नहमोषधेर्हस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुराजे भग्रभो यथा यस्यौषधे प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परुष्परुः
ततो यक्ष्मं विबादध्वा उग्रो मध्यमशिरेव साकं यक्ष्मप्रपातचाषेण किकिदेविना साकं मातस्य ध्राज्या साकन्नस्य निहाकया अन्यावोः अन्यामवत्वन्यान्यस्य उपावता ताः सर्वाः संविधाना इदं मे प्रावता वचः या फलिनेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्नः सः मुञ्चन्तो मासपथ्यादतो वरुण्या दुता अथो यमस्य पड्वेषात् सर्वस्माद्यव किल्बिषात् वयते समवदन्त दिव ओषधयस्परे यञ्जीवमश्नवामहेन सरिष्याधिपूरुषः या ओषधे सोमरोज्ञर्बह्वे सतवे चक्षणाः तासामसि त्वमुत्तमारङ्गमायशग्नहृदे या ओषधे सोमराज्ञर्विष्ठेदा पृथिवी मनो बृहस्पतिप्रसूता अस्यैतं दत्तवीर्यम् याश्चेदमुपशृण्वन्तु याश्च दूरम्बरागताः सर्वाः सङ्गत्याविरुद्धोऽस्यै दत्तवीर्यम् आशयुत्रे बलासस्यार्षस उपजितामसे अथो सतस्य यक्ष्माणां पकारो रसिनाशने मा वोरिषत्खणिता यस्मै चाहं खणामि वः द्विपच्चदुष्पदस्माकज्ञ सर्वमस्त्वनातुरम् ओषधयः संवादन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तज्ञ राजन्वारयामसे त्वां गन्धर्वा घनघ्नस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मान् अभिदासते मामाहिज्ञासे जनिताय पृथिव्याय वादिवज्ञा सत्यधर्मा व्यानाटे यश्चापश्चन्द्रा प्रथमो जजानकस्मै देवाय हविषाः विधेम अभ्यावर्तस्व पृथिवी यज्ञेन पयसा सह वपान्ते अग्निरेषितो आरोहत् अग्नयत्ते शुक्रं यच्चन्द्रं यत्पोतं यच्च यज्ञियम् तद्देवेभ्यो भरामसे विषमोर्जमहमित आदमृतस्य योनिं महिषस्य धाराम् आमाघोषो विषत्वा तनोषु जामि सेदिमने राममेवाम् अग्ने तव श्रवो वयो महिभ्राजन्ते अर्चयो विभावसो बृहद्भानो सवसा वाजमुग्ध्यं दधासि दासुषे कवे पावकवर्च शुक्रवर्च अणोनवर्च उदयर्षिभानुना पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसे प्रणक्षिरोदसे उभे ऊर्जोनपाज्यातवेदस्वशस्त्रधर्मन्दस्वधेतिभिर्हितः केशस्सन्दधुर्धोरे वर्पसश्चित्रोदयो वामजातः
हिरज्जन्नग्न प्रथयस्व जन्तुभिरस्मै रायो अमर्त्य सदर्शदस्य वपोषो विराजस्य प्रणक्षे सानसङ्कृतम् निष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेदसंशयं दग्रादसोमः राजम्बामस्य सुभगां महेमिषं दधासि सानसज्ञरयम् ऋतावाहनं महेशं विश्वदर्शतमग्नज्ञसुम्नाय दधिरे पुरोजनाः श्रुत्कारुणज्ञसप्रथस्तमं द्वागिरा देव्यं मानुषयुगा आप्यायस्व समेदुते विश्वतः स्वमवृष्ण्यं भवावाजस्य सङ्कथे सन्तेपयाज्ञसि समोऽयं दुवाजा संवृष्ट्यान्यभिमातिषाः आप्यायमानो अमृताय सोमदिविश्रवाज्ञस्युत्तमाने धिष्वा आप्यायस्वमदिन्तमसोमविश्वेभिरज्ञसुभिः भवानः सप्रथस्तमः सखा वृधे आते वत्स्वामनायमत्परमाच्युत्सधस्थात् अग्ने त्वां कामया गिराम् त्वभ्यन्ता अङ्गिरस्तमविश्वा स्वक्षितयः पृथक् अग्ने कामायये मेरे अग्नप्रियषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राळे को विराजते मये गृह्णाम्यग्रे अग्न्यग्राय स्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय मामो देवताः सचन्दाम् अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने समुद्रमभितः पिण्डमानम् वर्धमानो महा आच पुष्कर दिवो मात्रय वरिम्ना प्राधस्व ब्रह्मा जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरजो वेन आवः स बुद्ध्या उपमा अस्य पृष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवाह हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदा धार पृथिवीन्द्य उत मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः द्रप्सश्च स्कन्द पृथिवे मनोद्यामिमं च योनिमनुयश्च पूर्वः समानं योनिमनो सञ्चरं तं द्रप्सञ्जोहोम्यनो सप्तहोत्राः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इषावो यातु धानानाय एव वनस्पतिर्नो एव आपटेषु शरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः एवामिरोचने दिवो एवा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्स्वसदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः शृणुष्वपाज प्रसेदन्न पृथ्वे अहिराजे वाम वां इभेन दृष्टे मनो प्रसेदिन्द्रो नास्तासि विद्या रक्षसस्तपिष्ठे तव भ्रमास आशुयापतन्त्यनुस्पृशधृषता शोषोजानः
तपोज्ञश्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो विसृज विश्वगुल्काः प्रतिस्पशो विसृजतोर्नेतमो भवा पायुर्विशो अस्य अदब्धः यो नो दूर अघसज्ञ सो यो अन्त्यग्ने मा कर्तव्यधिरादधर्षेत् उदाग्नेदष्ट प्रत्यातनुष्मन्यमित्राओषधाद्दिग्महेते यो नो अरादिग्न समिधानचक्र नेतातुं ध्यक्ष्यथ सन्नसुष्कम् ऊर्ध्वो भवप्रते विद्याध्यस्मदाविष्कृनुष्मदेव्या अन्यग्ने अवस्थिरात नो हि यादुजो नाञ्जामि मजामि प्रवृणे शत्रून् अग्नेष्वातेजसा साधयामि भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धस्य च से शिवाभिः दिव्यमूर्धानं दधिषे स्वर्शान् जिह्वामग्ने चकृषे इन्द्रस्य द्वौजसा साधयामि भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्र नियुद्धस्य च से शिवाभिः दिव्यमूर्धानं दधिषे स्पर्शान् जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् अभोद्यज्ञः समेधा जनानां प्रतिधेनु मे वायते मुषासम् यः वा एव प्रभयामुज्जिहाः न प्रभानवस्य श्रतेन गमच्छाम् अभोः जामकवये मेद्यायवचो वन्दारो वृषभाय वृष्णे गवेष्टिरो नमसास्त्वामग्नौ दिवे वरुक्ममो रुव्यञ्चमश्रुत् अयमिह प्रथमाधाय धातृभर्होताय ज्येष्ठो अध्वरेष्वेड्याः यमप्रावाणो भृगवो विरुरुचर्वणेषु चित्रं बिभ्वं विसेविसे इन्द्रस्य तौजसा साधयामि भवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्र नियुद्धस्य च से शिवाभिः दिव्यमूर्धानं दधिषे स्पर्शान् जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् ध्रुवासे धरुणास्त्रता विश्वकर्मणा मा त्वा समुद्र उद्दादेन्मासो पर्णो व्यर्थमाना पृथिवीन्द्रगः प्रजापतिष्ट्वा साधयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्य मन् व्यचस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यासे भोरासे भौमेरस्य देदिनस्य विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रे पृथिवी यज्झ पृथिवीन्द्रगः पृथिवीं माहिज्ञासेः विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय दानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय आज्ञष्ट्वाभिपातो मह्या स्वस्त्याच्छर्दिश सन्तामेनतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासेदा श्री श्रीनिवासाय नमः। श्री पद्मावती देव्ये नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री श्री वेंकटेश्वर भगवान तथा जगन्माता जगत स्वरूपिणी साक्षात जगत प्रसूति जिन्हें मानते हैं देवी लक्ष्मी की स्वरूपिणी देवी पद्मावती देवी के कल्याणोत्सव में रक्षा सूत्र बंधन, तत्पश्चात
यहाँ पर भगवत कैंकर्य स्वरूप यज्ञोपवीत धारण के पश्चात अर्चक गण द्वारा किए जाने वाले इस मुहूर्त का नाम है कन्यादान। यहाँ पर माता पद्मावती के हाथ में नारियल रखकर प्रभु श्री वेंकटेश्वर हाथ में उनका हाथ तमाते हैं अर्चक गण। तमाकर लोक रक्षणा एवं लोक पालना करने का संकल्प लेते हुए उनके हाथ में इनका हाथ तमाते हैं। भगवत कैंकर्य स्वरूप किए जाने वाले यह कर्म में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तथा पद्मावती देवी के गोत्रों का यहाँ पर समस्त ब्रह्मादि मंडली को सुनाने के पश्चात भगवान को एवं भगवती को समर्पित करके तथा इनके कल्याणोत्सव में आगामी जो विधि है मंगलसूत्र की विधि, उसके लिए मंगलसूत्र के लिए महामंगला देवी का आवाहन कर मंगलसूत्र में उनका पूजन होगा। जैसे कहते हैं लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंग दामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंदकटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। वह मुकुंद की पत्नी देवी पद्मावती जो हैं वह साक्षात पद्म प्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं महिसन्निधिस्त्व। पद्म प्रिय पद्मिनी पद्महस्ते, पद्म को हस्त में धारण करने वाली देवी जो है वह देवी पद्मावती का यहाँ पर कल्याणोत्सव हो रहा है। अर्चक गण द्वारा भगवान एवं भगवती को यहाँ पर यह अद्वितीय सन्निवेश है। यहाँ पर जीलकर्रा बेल्लम जिसे कहते हैं, जहाँ पर जीरा एवं गुड़ का मिश्रण होता है, उस मिश्रण को सहस्रार चक्र पे लगाने से ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है तथा उस पल तक ब्रह्म ज्ञान का वहाँ पर आवाहन भी होता है। इसके लिए अर्चकगण द्वारा वधू वर के बीच एक आच्छादन रखकर उनके सिर पर सहस्रार चक्र जहाँ होता है, ब्रह्मरंध्र जहाँ होता है, वहाँ पर इस मिश्रण को रखते हैं। तत्पश्चात विधि यह होगी कि भगवान के हाथों माता को मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। उससे पहले प्रभु को आरती दिखा रहे हैं। श्रियकांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। इन वेद मंत्रों से, इन पुराण वचनों से, इन मंगल शासनों से प्रभु की दिगारतो आभ्यकल्पमानो इंद्र इव देवा आभ्यसंवेशन्तो तया देवतयांगिरस्वध्रुवे सेद्वतम् अशाश्लासि सह माना सहस्वाराते सहस्वप्रतनायतः सहस्रवीर्यासि समाजन्वा सहस्वेमा अभिमाते सहस्वप्रतनायतः सहस्व सर्वं पाप्मानज्ञ सह मानास्योषधे मधुवातारदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवग्रजाः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः माद्वेर्गावो भवन्तु नः अपाङ्गं वंसेदमात्वा सूर्योऽभिताप्सेन् माग्निर्वैश्वानरः अच्छन्नपत्रा प्रजा नो वेक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्
त्रीन् समुद्रान् समसृपत्स्वर्गानपां पतर्वृषभ इष्टकानां परेशं वसो न स्वकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः महेद्योः पृथिवे च न इमै यज्ञं मे मिक्षताम् विप्रतान्न भरेमभिः विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा ध्रुवासे धरुणेतो जज्ञ प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधिजातवेदोः सगा यत्रिया तृष्टुभा नुष्टुभा जदेवेभ्यो हव्यं वाहत प्रजानन् ईशराय रामस्वसहसेद्युम्न ऊर्ज अपत्याय सम्रालस्य कृशा स्वरालस्य भीमातिहाय नरालस्य रक्षोः सहर्वरालस्य मित्रः ध्रुवासे धरुणेतो जज्ञ प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधिजातवेदोः सगा यत्र्या तृष्टुभा नुष्टुभा च देवेभ्यो हव्यं वाहत प्रजानन् ईशराय रामस्वसहसेद्युम्न ऊर्ज अपत्याय सम्रालस्य स्वरालस्य सारस्वतोत्तोत्सौ प्रावताम् अग्नेयुक्ष्वा हि एतवाश्वासो देवसदवः अरं वहन्ति मन्यवे युक्ष्वा हि देवहोता मां अश्वाहं अग्ने रथिरिव निहोता पूर्व्यसदः सम्यक् स्रवन्ति सरितो नधेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशे मिहिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः रुचेत्वा रुचेत्वा भासेत्वा ज्योतिषेत्वा अभोदितं विश्वस्य भुवनस्य वाजेन मग्नार्पैश्वानरस्य च अग्नज्योतिषाज्योतिष्मान् रुक्मा वर्चसा वर्चस्वान् सहस्रदासि सहस्रायत्वा आदित्यं गर्भं पयसा समं सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् परे वृन्धे हरसामाभिमग्नस्था सतायुषं गृणहि चीयमानः पातस्य ज्योतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानज्ञ शारीरस्य मध्ये शिशुन्नदीनाग्न हरिमद्रे बुद्ध्रमग्न माहिज्ञसेः परमे व्योमन् अजस्रमिन्दो मरुषम्भोरण्यमग्निमेले पूर्वचित्यन्नमोभिः सपर्वाभर्ऋतुषक्कल्पमानो गां माहिज्ञसे तदेतिं विराजम् परोत्रेन्द्वष्टर्वरुणस्य नाभिमविञ्जज्ञानाग्नरजसः परस्मात् महेज्ञसाहस्रे मसूरस्य मायामग्नमाहिज्ञसे परमे व्योमन् यो अग्निरग्निरध्यजायत शोकात् पृथिव्या उत वा दिवस्परे येन प्रजा विश्वकर्मा जजानतमग्नेहेल परे ते वृणक्तो चित्रं देवानामुदगादने गञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः
आप्राद्या वा पृथिवे अन्तरिक्षज्ञ सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च इमं माहिज्ञसेर्विपादं वशुज्ञसहस्राक्ष मेधाय चीयमानः मयं पशुं मेधमग्नजुषस्वतेन जन्वानस्तन्वो निषेध मयुन्ते सुगृच्छतु यं विष्मस्तन्ते सुगृच्छतु मम माहिज्ञसेर्घशफं पशुं कानिकृतं वाजिनं वाजिनेषु गौरमारण्यमनोददिशामि तेन जन्वानस्तन्वो निषेधा गौरं ते सुगृच्छतु यं विष्मस्तं सुगृच्छतु इमग्नसाहस्रज्ञ सुतधारमुत्सं यच्यमानज्ञ शरीरस्य मध्ये घृतं दुहानामदिञ्जनायाग्न माह्यज्ञसे परमे व्योमन् गवयमा तन्वो निषेध गवयन्ते सुगृच्छतु यं विष्मस्तन्ते सुगृच्छतु अजोह्यम् इममोहर्नायुं वरुणस्य नाभ्यन्त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदां त्वष्टप्रजानां प्रथमं जनेत्रमग्न माहिज्ञसे परमे व्योमन् उष्ट्रामारण्यमनोददिशामि तेन जन्वानस्तन्वो निषेधा मुष्ट्रं ते सुगृच्छतु यं विष्मस्तं ते सुगृच्छतु अजोह्यज्ञावजनिष्ठसोगात् सो आपश्यज्जनितारमग्रे तेन देवा देवतामग्रमायज्ञस्तेन रोहमायन्नुपमेध्यासः सरभमारण्यमनोददिशामि तेन जन्वानस्तन्वो निषेधा सरभं ते सुगृच्छतु यं विष्मस्तं ते सुगृच्छतु त्वय्यविष्टदासु शोण्डृगः पाहि शृणुधि गिराः रक्षातोकमुतत्मना अपान्तेमन् साधयाम्यपान्तोद्मन् साधयाम्यपान्त्वा भस्मन् साधयामि अपान्ताज्योतिषि साधयाम्यपान्त्वाजन साधयामि अर्णवे त्वा सदन साधयामि समुद्रे त्वा सदन साधयामि शरीरे त्वा सदन साधयामि अपान्त्वा क्षये साधयाम्यपान्त्वा सधेषि साधयामि अपान्त्वा सदन साधयाम्यपान्त्वा सदस्थे साधयाम्यपान्त्वा योनौ साधयामि अपान्त्वा पुरेश साधयाम्यपान्त्वा पाथासि साधयामि गायत्रेण त्वा छन्दसा साधयामि त्रेष्टोभेन त्वा छन्दसा साधयामि जागतेन त्वा छन्दसा साधयामि आनष्टोभेन त्वा छन्दसा साधयामि पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा साधयामि अयं वरो भुवस्तस्य प्राणो भवो वायनो वसन्तः प्राणायनः गायत्रे वासन्ते गायत्र्यै गायत्रं गायत्रादोपाग्नशरोपा
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवती श्री पद्मावती देवी के इस दिव्य मंगल कल्याणोत्सव में भगवती के लिए जो नूतन वधू के लिए पहनाए जाने वाले मंगलसूत्र की पूजन यहाँ पर हो रहा है। सर्वमंगला देवी का आवाहन कर षोडशोपचार विधियों के पश्चात क्षीर से अभिषेक कर, दूध से अभिषेक के पश्चात शुद्धोदक से अभिषेक किए। तत्पश्चात आचार्य गण द्वारा माता श्री सर्वमंगला देवी का पूजन, तत्पश्चात निवेदन अनंतर भगवान द्वारा माता को मंगलसूत्र पहनाना। ऐसे एक अद्वितीय पल का दर्शन करने से हम भक्तों के पुण्यों का एक अद्वितीय रूप से वर्धन हो जाता है तथा भगवत स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस दिव्य कल्याण महोत्सव में भगवान के कृपा के लिए आइए हम सब मिलकर कहते हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा। यमदग्निर्ऋष प्रजापतिगृहे दया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः श्रेयो वसेय आयुत्सम्भूतं भूतं चित्राकेतः प्रभाडाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानाथमग्यस्तपन्नमितपन्न रोचकारोचमान शोभन शोभावान कल्याणः। जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा పసనైన మీగడ పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడ పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామిరలోని మిన్సువాసన నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన నీలవ
నిండిన నిధానమవై నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవు. कयन्ति आपास्यो वा आयन्द्रं जातम् ओ वा आसाताहि वन्वानाः साः सुवीर्या आहवो वाः वृधे नकिदेवाः येनाहि इनीमासाहि मासीया नकियायो पायाः पयामासाहि मासीया मन्द्रस्तुत्याहं चाराः चरामासाहि मासीया दोषो आघात बृहद्गाया दुमद्गामान् आतर्वाणाः सुहे ओ ये देवाहं सवो वाह ताः रोहाये येषो वृषाः आपूर्व्याः योच्छते होवाये प्रियादाये वाः स्तोषा हवामाः स्वीनो वाः व्रो वो हाये इंद्रो दधि चो हस्तवीर्या ओम सप्तधाम प्रियाणि चक्रमे त्रेदानदे पदं समूढपस्य पागुं सुरे स्वाहा
पूर्णाहुतिमतमाञ्जोते सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విడీలు పూని బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।